Hi. Sorry for the delay. So sorry for the delay. We'll start. So hello students, welcome back to the one shot series of anatomy. छोटे छोटे topics discuss करते हैं in this one shot series. So today let us discuss about the axillary artery. बहुत difficult topic लगता है बच्चों को ये axillary artery, relations of the axillary artery with the brachial plexus. So just try to understand the concept. Axillary artery will be easy for you. Hi, good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening and sorry for the delay, sorry for the delay. Okay, I'm starting now. I'm starting. Chalo. So now have a look at this slide. Yes, slide dekh lo. If you can answer, be interactive, it will be easy. Chalo bachcho, what is this? That's a manubrium sterni. ये है body of the sternum. ये होगा clavicle. This is the scapula. ये कौन सा border है scapula का? Superior border of scapula, right? Superior border. This is the first rib. ये है first rib. These are the cervical vertebrae. Cervical vertebrae होंगे ये. यहाँ पे humerus है. That's the humerus here. Fine. So what have I drawn for you? This is the sternum, the manubrium, the body of the sternum, the clavicle, the scapula. ये है superior border of scapula. बोलता हूँ प्रशांत. We'll see. Superior border of scapula. This is the first rib. ये area क्या होगा? What is this area? बोल सकते हो? चलो students, come on, let us be interactive. Interactive session रखते हैं ये. आप भी answer करो. I will also answer. I will also explain. So it will be an interactive session. Yes, Kinjal, Gaurav, Prashant. What is this cross area? ये क्या होगा? What is this cross area? This is the axilla. ये है axilla. ये जो cross किया ना, ये है axilla. What is this? इसे क्या बोलते हो? ये आप देख रहे हो ये. This is known as the apex of the axilla. इसे बोलते हैं apex of the axilla. अब किसी भी structure को axilla में आना है. Any structure, if it has to come from the axilla, intermuscular space नहीं है वो. This is the axilla. ये जो cross किया ना, that's the axilla. This is the apex of the axilla. Apex क्या होता है? Apex of the axilla वो होता है जहां से the structure will come into the axilla. कौन आता है? Brachial plexus and axillary artery enters the axilla through the apex. Fine. Now जो muscles यहां से शुरू होंगे sternum से and they will go to the humerus. What are they going to form? ये muscles क्या बनाएंगे? Anterior wall of axilla. So anterior wall of axilla is formed by which muscles? बोल सकते हो? What is this muscle which begins from the sternum and goes and gets inserted on the lateral lip of the bicipital groove? Answer this. So मैं ना थोड़ा सा अलग तरीके से explain करना चाहता हूँ so that you will understand the concept rather than just mugging up. आप mug up करोगे axillary artery relations नहीं समझ में आएगा. So let us understand in a different way. हाँ बोलो बच्चों, what is that muscle? The muscle जो sternum से begin होता है, which begins from the sternum and which gets inserted on the lateral lip of the bicipital groove. What is this muscle? The pectoralis major. एक दूसरा muscle है which begins from the ribs. ऐसे आता है, it begins from the ribs and it goes to the coracoid process. ये कौन सा muscle होगा? जो ribs से arise होगा. यहाँ पे ribs होंगे. That's the ribs. From the ribs to the coracoid process. ये muscle का नाम क्या है? Pectoralis minor. Okay, I'll just show you one slide. ये देखिए, just see the slide. Look at this slide. What is this big muscle? चलो identify this big muscle. देख रहे हो? Which is cut here. जो यहाँ पे cut किया. What is this big muscle? ये पूरा muscle ऐसे cover कर रहा था इसको. This is the pectoralis major, जो sternum से शुरू होता है, costal cartilages से शुरू होता है. It begins from the medial 2/3 of the clavicle. It begins from the external oblique aponeurosis. Hi Satyendra, namaste. So ये है pectoralis major and pectoralis major का insertion is on the lateral lip of the bicipital groove. Fine है? Clear है? Okay. अब pectoralis major को निकाल देते हैं. We remove the pectoralis major. And what is this muscle? Look at this muscle. आप ये देख रहे हो? This muscle which begins from the ribs and which gets inserted on the coracoid process of scapula. ये देख रहे हो? That's the coracoid process of scapula. Muscle का नाम? Pectoralis minor. That's the pectoralis minor. So pectoralis major को निकाल दिया. What is the muscle below the pectoralis major? That's the pectoralis minor. बराबर है? एक और muscle. A muscle which begins from
ये क्या है? कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. ये कॉस्टल कार्टिलेज है, ये रिब है, तो दैट्स द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. एक मसल यहां से शुरू होता है. अ मसल बिगिंस फ्रॉम द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एंड द मसल हो where's that? That's a clavicle. ये clavicle है. So this muscle begins from the costochondral junction and gets inserted on the clavicle, inferior surface of clavicle. Name. What is the name of this muscle? Yes, Faisal. A muscle which begins from the first costochondral junction and ये muscle जाता है clavicle के inferior surface पे. Anything below is known as sub. muscle का नाम subclavius. subclavius. ठीक है, subclavius. तो ये है subclavius. This number one, ये number one कौन है? Pectoralis major. Number two is pectoralis minor and this number three is the subclavius. ये है subclavius. मतलब मैंने क्या किया है, ये तीनों मसल्स है ना, ये जो 1, 2 एंड 3, ये तीनों मसल्स क्या बनाते हैं? दिस इज आवर एक्सिला, बराबर, ये है एक्सिला. ये वॉल देख रहे हो आप, यू आर सीइंग दिस वॉल. व्हाट इज दिस वॉल? दैट्स द एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. ये होगा एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला एंड एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला इज फॉर्म्ड बाय 3 मसल्स. समझ में आ रहा है बच्चों? नंबर 1 इज द पेक्टोरलिस मेजर, नंबर 2 इज द पेक्टोरलिस माइनर एंड नंबर 3 इज द सबक्लेवियस मसल. सबक्लेवियस. इंसिडेंटली, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द एक्सिलरी आर्टरी, बराबर है. सो दिस इज द पेक्टोरलिस माइनर, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर. सो ये जितने भी मसल्स है ना, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर. मतलब ये जितने भी मसल्स हैं, दे आर कवरिंग द एक्सिलरी आर्टरी. ये एक्सिलरी आर्टरी को कवर कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट आर दे फॉर्मिंग फॉर द एक्सिलरी आर्टरी? कम ऑन स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर दिस? What are they forming for the axillary artery? Pectoralis major, pectoralis minor, and subclavius thoda sa. What are they forming? They are forming the anterior relations of the axillary artery. ये axillary artery देख रहे हो? मतलब ये है ना, they form the anterior wall of axilla and ये जितने भी muscles है, they are going to cover the axillary artery from front. तो ये बनेगा अपना anterior wall of axilla. ये बनेगा अपना एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. समझ में आ रहा है? सो एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियर रिलेशंस में पेक्टोरलिस मेजर आएगा, पेक्टोरलिस माइनर आता है. सो अगर आप एक्सिला समझ जाओगे, इफ यू अंडरस्टैंड द एक्सिला, ऑटोमेटिकली एक्सिलरी आर्टरी समझ में आ जाएगा. फाइन है? ओके. नाउ ये एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला को निकाल दिया. अब ये जो देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस इज द एक्सिला. ये है एक्सिला, ये है एक्सिला. And what is this now? This is number 1, this is number 2, and this is number 3. ये 3 मसल्स क्या बना रहे हैं? This are this muscles. ये पीछे का वॉल देख रहे हो, पीछे का वॉल. So this muscles are going to form the posterior wall of axilla. They are going to form the posterior wall of axilla. So posterior wall of axilla is formed by 1, 2, and 3. ये number 1 कौन है? Latissimus dorsi. Number 2 कौन है? Teres major. And number 3 कौन है? Subclavius. Subclavius. So subclavius, teres major and latissimus dorsi, ये क्या बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे posterior wall of axilla. They are going to form the posterior wall of axilla. समझ में आ रहा है? Are you able to follow this? अब I'm not going into details of axilla, but if you understand this, you will understand the relations of the axillary artery. Understanding? Now, अगर मैं आपको बोलूं, if I tell you the axillary artery is lying on this muscles, axillary artery ये muscles के ऊपर होता है, that means ये जितने भी muscles हैं, subclavius, subscapularis, subclavius नहीं है बच्चा, ये subscapularis है, subscapularis. हाँ, subscapularis, ये है subscapularis. Number 3, ये teres major and latissimus dorsi. What are these 3 muscles going to form? These 3 muscles are going to form the posterior relations of the axillary artery. These 3 muscles are going to form the posterior wall of axilla. मतलब बच्चों, आपको axilla के साथ साथ axillary artery भी समझ में आ जाएगा. और if you understand the axillary artery, you will understand the axilla also. So anterior wall of axilla is formed by pectoralis major, pectoralis minor, subclavius. Fine. The posterior wall of axilla is formed by the subscapularis, the teres major, the latissimus dorsi. अब इनके ऊपर कौन है? एक्सिलरी आर्टरी. सो ये तीनों मसल्स क्या बनाएंगे एक्सिलरी आर्टरी के लिए? पोस्टीरियर वॉल.
So posterior wall of axillary artery would be formed by which muscles? The subscapularis, the teres major, and the latissimus dorsi. I hope I'm clear to all of you. Are you able to follow this? Understanding? Okay, fine. अब है ना, we'll come back to this. See this slide. ये slide देख लो. Just see this slide. ये एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ. I'm telling you in a different way. Fine. Now you tell me. This is the heart here. ये heart है. ये ऐसे heart है. ये है arch of aorta. What are these branches from the arch of aorta? अब ये details में नहीं जाते. What is this artery? ये artery का नाम क्या है? This is the subclavian artery. This is the left. This is the right subclavian artery. This is the left subclavian. This is the right subclavian artery. Fine. Okay, very good, very good. So now you tell me, ये कौन है? Manubrium sterni के पीछे ये कौन है? Arch of aorta. That's the arch of aorta. What is this artery which begins from the arch of aorta? ये कौन है? ये है subclavian artery. तो subclavian artery on the left side begins from the arch of aorta. This subclavian artery crosses the outer border of the first rib. अब जैसे ये outer border of the first rib को cross करता है, the subclavian artery now becomes what? Axillary artery. अब ये axillary artery बन गया. Now this axillary artery enters the apex. ये apex है and यहाँ से it will come in the axilla. ये axilla में आ गई. मतलब if I just draw this for you, what is this artery? यहाँ तक. What is this artery? Till here. That's a subclavian. ये subclavian artery है. Subclavian artery जैसे first rib को cross करता है, the moment the subclavian artery crosses the outer border of the first rib, अब ये क्या बनेगा? Axillary artery. You understanding? This becomes the axillary artery. Now this axillary artery enters the apex. ये क्या है? Apex of the axilla. And now this enters the axilla. ये area क्या है? Axilla. Fine. Now, what is this muscle which is inserted on the medial lip of the bicipital groove? ये medial lip of bicipital groove पे ये muscle है teres major. Teres major. Fine. ये teres major. So जैसे ये axillary artery, the moment this axillary artery crosses the teres major, the lower border of teres major, अब ये कौन है? What is this artery? Brachial artery. That's a brachial artery. समझ में आ रहा है बच्चों? Are you able to follow this? मतलब axillary artery इतना है, यहां से यहां तक कौन है? Axillary artery. Axillary artery is a continuation of what? Axillary artery is a continuation of subclavian artery. ये clear है? This is very important. ये वाइवा में पूछते हैं, ये MCQs में भी पूछते हैं. So the axillary artery is a continuation of the subclavian artery. Where? At the outer border of the first rib. जैसे ये first rib के outer border को cross करता है, subclavian artery becomes the axillary artery. Fine. Now this axillary artery enters the apex, comes in the axilla. Lower border of teres major पे अब ये क्या बन गया? Brachial artery. अब ये बन गया brachial artery. समझ में आ रहा है? Okay, fine. Now you tell me what is this coracoid process and what is this muscle? ये muscle का नाम? Anyone? What is this muscle? I just told you. मैंने अभी आपको बोला है. What is the name of this muscle? ये है pectoralis minor. Pectoralis minor. That's a pectoralis minor. अब बच्चों बोल सकते हो, what is the relation of the pectoralis minor with the axillary artery? बोलो. मतलब ना pectoralis minor आगे है and the axillary artery is going behind the pectoralis minor. Axillary artery pectoralis minor के पीछे से जाती है. It goes behind the pectoralis minor. In other words, this pectoralis minor divides the axillary artery into 3 parts. समझ में आ रही है? This pectoralis minor divides the axillary artery into 3 parts. This is the first part, यह है second part, and that's a third part of the axillary artery. समझ में आ रहा है बच्चों? Axillary artery के 3 parts कौन बनाता है? Pectoralis minor. Why? Because the artery goes behind the pectoralis minor.
आर्टरी पेक्टोरलिस माइनर के पीछे से जाती है, सो पेक्टोरलिस माइनर डिवाइड्स द एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स. परफेक्ट, समझ अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्ट पार्ट कहां से कहां तक है? फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द पेक्टोरलिस माइनर, फर्स्ट पार्ट. पेक्टोरलिस माइनर के पीछे सेकेंड पार्ट, एंड पेक्टोरलिस माइनर टू टेरिस मेजर, ये है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. चलो बच्चों बोलो, इफ इट्स क्लियर जस्ट पुट अ थम्स अप इफ इट्स क्लियर. तो मैं प्रोसीड करता हूं, देन आई विल प्रोसीड. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. बच्चों को ये समझ में नहीं आता एक्सिलरी आर्टरी, उसके रिलेशंस क्या है. हाँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इन अ डिफरेंट वे. तो एक बार वापस, एक बार क्विक रिवीजन. चलो बच्चों क्विक रिवीजन. सो एक्सिलरी आर्टरी यहां से यहां तक, दिस इज आवर एक्सिलरी आर्टरी. दिस एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. द एक्सिलरी आर्टरी एंटर्स द एपेक्स, कम्स इन द एक्सिला. एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, ये बन गया ब्रेकियल आर्टरी. दिस एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय पेक्टोरलिस माइनर. पेक्टोरलिस माइनर फाइन है बच्चों. हे हेलो, बट यू टेल मी वन थिंग, ये ऐसे तो दिखता नहीं है ना. जस्ट समथिंग, जस्ट अ बिग मसल हियर. ये बड़े मसल को हमने निकाल दिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बिग मसल? कैन एनीवन टेल मी? दिस बिग मसल हियर, यहाँ पे एक बड़ा सा मसल है, वो मसल को हमने निकाल दिया, तब ये दिखेगा, तब ये दिखेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बिग मसल? हाय जसिका, व्हाट इज दैट बिग मसल? You would not see this. No, you have to remove that big muscle. Can you understand this? What is that big muscle? Any guesses? Any guesses? This is that big muscle. Look at this. This is that big muscle. This is that big muscle which we have cut from here. Yeah, ऐसा बड़ा muscle है. This big muscle is going to cover this entire thing. So what is this big muscle? Pectoralis major. Very good, very good, Sudhir. तो जैसे मैंने pectoralis major को निकाल दिया, I see this. I see this. मतलब एंटी एक्सिलरी आर्टरी का एंटीरियर रिलेशन क्या होगा? एक्सिलरी आर्टरी का एंटीरियर रिलेशन इन ऑल दिस 3 पार्ट्स इज गोइंग टू बी द पेक्टोरलिस मेजर. इन एडिशन द सेकेंड पार्ट का एंटीरियर रिलेशन क्या होगा? पेक्टोरलिस माइनर. पेक्टोरलिस माइनर ओनली सेकेंड पार्ट में है ना? सेकेंड पार्ट में. हाँ जैसिका, हाँ. सो एंटीरियर रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी पेक्टोरलिस मेजर. सेकेंड पार्ट में इन एडिशन पेक्टोरलिस माइनर. परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, इतना क्लियर है. दैट्स द एंटीरियर रिलेशन. नाउ कम टू द पोस्टीरियर रिलेशन. पोस्टीरियर रिलेशन. अब बच्चों बोलो, दिस एक्सिलरी आर्टरी इज लाइंग ऑन समथिंग. हे, दिस एक्सिलरी आर्टरी के पीछे कुछ है ना. दिस एक्सिलरी आर्टरी के पीछे मसल्स है. एक्सिलरी आर्टरी के पीछे मसल्स है. And these muscles are going to form the posterior relations of the axillary artery. Which muscles? Which muscles? These muscles. Which muscles? This is number 1, this is number 2, this is number 3. So 1, 2, 3, ये जो 3 muscles है ना, they are forming the posterior wall of axilla. These 3 muscles are going to form the posterior relations of the axillary artery. समझ में आ रहा है? So posterior relations of axillary artery would be number 3, the subscapularis, number 2, the teres major, and number 1 is the latissimus dorsi. I hope this is clear to all of you. Fine. समझ में आ रही है relations? ठीक है? Okay. Perfect, perfect, perfect. So now just tell me one thing. एक चीज बोलना. हाँ, serratus anterior is the posterior relations in the first part. First part का posterior relation serratus anterior आता है. क्यों मैं बोलता हूँ? Why I'll tell you. तो बच्चों ना अब start करते हैं. एक मिनट. Now let us start like this. First part. चलो first part का anterior relation कौन है? Pectoralis major. Pectoralis major है first part का anterior relation. Plus एक फेशिया होता है यहाँ पे जिसका नाम है क्लैविपेक्टोरल फेशिया. सो फर्स्ट पार्ट का पेक्टोरलिस मेजर, क्लैविपेक्टोरल फेशिया. फर्स्ट पार्ट का पोस्टीरियर रिलेशन देखो. जस्ट बच्चों, दिस इज अ कंफ्यूजन हियर. द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज लाइंग हियर ऑन द फर्स्ट रिब एंड देयर इज अ मसल व्हिच बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट रिब. व्हाट इज दिस मसल? ये मसल का नाम क्या है? सेराटिस
anterior. That's the serratus anterior. This muscle is the serratus anterior. So, yes, Sudhir, yes. Yes, Jessica, very good. So, first part आप देखोगे ना, first part का posterior relation होगा rib and the serratus anterior. First part का anterior relation कौन है? Pectoralis major. First part का posterior relation क्या होगा? Serratus anterior. The first and second rib. Second part का anterior relation कौन है? Pectoralis major. In addition, pectoralis minor. अब second part का posterior relation कौन आएगा? Subscapularis. मैं draw करता हूं. I'll draw this. Come to the third part. Third part का anterior relation is going to be the pectoralis major. Posterior relation is going to be the teres major and the latissimus dorsi. Teres major and the latissimus dorsi. एक मिनट. Don't get confused. I'll just draw this for you. I'll just draw this. Let us make a diagrammatic diagram for you. Look at this. अब ये कैसे बनाऊं मैं? So this entire big muscle, ये anterior relation. So ये कौन है? Pectoralis major. This muscle, that's a pectoralis minor. अब समझ में आ रहा है? Means what is this part? ये क्या part होगा? First part. ये है second part. ये है third part. ये third part. ठीक है? Okay, fine. So anterior relation देखो, pectoralis major in all the three parts, and this is pectoralis minor only in the second part. Second part में pectoralis minor. Posterior relation देखिए, posterior relation. This is the rib. ये rib है. So posterior relation of the first part is this muscle. ये कौन है? Serratus anterior. Serratus anterior. ये second rib आ गया. Second rib आ गया. This is the serratus anterior. That's the serratus anterior. So first part का posterior relation is going to be the rib and the serratus anterior. अब second part का posterior relation is what? Second part का posterior relation is going to be the subscapularis. Second part का posterior relation is subscapularis. And third part का posterior relation is going to be the teres major and the latissimus dorsi. Teres major and latissimus dorsi. बच्चों, are you able to follow this? तो मैंने ये diagrammatic representation बनाया आपके लिए. This is the easiest way to understand axillary artery. Simple है. So first part देखो, first part का anterior relation pectoralis major. First part का posterior relation is the ribs and the serratus anterior. Second part का anterior relation is pectoralis major, pectoralis minor. Posterior relation is subscapularis. Third part का anterior relation is going to be the pectoralis major. The posterior relation is going to be the teres major and the latissimus dorsi. I hope this is clear. Clear है? Understanding? I hope this is clear to all of you. ठीक है? अब ये देखना, just have a look at this. हाँ, ये slide देख लो. अब बोलो, what is this muscle? ये क्या muscle है? चलो answer this, students. What is this muscle? What is this muscle? Come on, answer. Come on. Yes, Kinjal. Yes, Biraj. Jessica, Sudhir, Tushar. Yes, Diya. Sorry. Diya, Sudhir. I'm so sorry. Yes. Answer this. Come on, students. Come on. What is this muscle? This is the pectoralis minor. You can understand, no? अब ये slide समझ में आ रहा है? So हमने क्या किया? We've removed the anterior wall of axilla. अब जो दिख रहा है आपको, now what you are seeing is the axilla, and this is the posterior wall of axilla, which is formed by, यहाँ पे आएगा serratus anterior. This is the second part. Second part के पीछे आएगा subscapularis. This would be the teres major and the latissimus dorsi. I hope this is clear to all of you. Fine. Okay. Now understand it in a different way. So have a look at this. So the same thing, I've written it in words. So, आप ये बाद में देख सकते हो. All this will be there for you. The notes will be there. And okay. So now see, this is the pectoralis minor. So ये first part, ये second part, ये third part. ये जो पीछे देख रहे हो, that's a posterior relation. This is the ये है latissimus dorsi. This is the teres major. This is the subscapularis.
So subscapular is teres major, latissimus dorsi, and ऊपर आएगा serratus anterior. Fine, that's the axillary artery. Now see, look at this. So this is pectoralis minor, this is subscapularis, this is teres major, that's the latissimus dorsi. Okay, perfect. ठीक है. Now I'll draw a slide for you. देखो, if you can understand this. Now that's the axillary artery. Now अब देखो, I'll just draw everything for you here. That's the axillary artery. अब medial side पे axillary vein होता है. Medial side पे axillary vein होता है. This is the axillary artery. This is the axillary artery. I'll just draw this for you. First part, second part, third part के relations देखिए. Relations. This is how you remember axillary artery, axillary vein. ठीक है? So this is first part, second part, third part. अब यहाँ पे ये मसल कौन है? ऊपर pectoralis major. यहाँ पे कौन है? Pectoralis major, pectoralis minor. And who's this in the third part? Pectoralis major. ठीक है? First part के posterior relation में ये कौन है? This is the serratus anterior. Serratus anterior. Second part के posterior relation में ये कौन है? Subscapularis. Subscapularis. And third part के posterior relation में कौन है? This is teres major and this is latissimus dorsi. Fine है बच्चों, ये clear है? Okay, so I've drawn, this is the first part. Easy, easy, easy. First part, second part of axillary artery and third part of axillary artery. Fine है? So first part में pectoralis major, second part में pectoralis major minor, third part में pectoralis major. या anterior relation. Posterior relation, first part में serratus anterior, second part में subscapularis, third part में teres major, latissimus dorsi. Fine. Now students, look at this. Look at this. Look at this. एक मिनट, ये बहुत ही नजदीक आ गया. थोड़ा सा साइड करता हूँ उसको. थोड़ा सा साइड दे दो बॉस. थोड़ा सा साइड दे दो. Okay. Now in the second part, what is this cord? What is this cord? And what is this cord? Come on. Brachial plexus के 3 cords होते हैं. Brachial plexus के 3 cords होते हैं. Lateral cord, medial cord, posterior cord. अब vein is on the medial side. हाँ, तो medial कौन सा है? Vein is on the medial side. This is the axillary vein. So this is medial. ये कैसे लिखूं मैं? This is the medial and this is the lateral side. Lateral side. हाँ, axillary artery lateral side पे होती है, vein medial side पे होती है. In the second part, the cords. कितने cords हैं अपने पास? How many cords of the brachial plexus do you have? 3 cords. Lateral cord, medial cord, and posterior cord. The cords are placed according to the names in which part of the axillary artery? The cords are placed according to the names in the second part. Second part. मतलब what is this cord? ये cord कौन है? What is this cord? This is the medial cord. This is the posterior cord, and that's the lateral cord of the brachial plexus. मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस में जो कॉर्ड्स होंगे वो अपनी नाम की तरह होते हैं. दे आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नेम्स. दैट मींस द कॉर्ड व्हिच इज मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी इन द सेकेंड पार्ट हैज टू बी मीडियल कॉर्ड. जो कॉर्ड पीछे होता है दैट हैज टू बी द पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड द कॉर्ड ऑन द लैटरल साइड हैज टू बी द लैटरल कॉर्ड. ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. द कॉर्ड्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नेम्स इन which part of the axillary artery? Second part of the axillary artery. Just this is it. ये याद रखना. The cords are placed according to the names in the second part. अब first part में क्या होता है? First part में भी cords होते हैं. But cords are not placed according to the names. अपने नाम की तरह नहीं होते. Medial cord जो है ना, that is here. The medial cord is here. Medial cord जो medial side पे है वो पीछे जाता है, and posterior cord laterally जाता है, and lateral cord laterally जाता है. ये ऐसे rotate होता है, rotate. So first part of axillary artery and second part of axillary artery में cords होते हैं brachial plexus के. The cords are placed according to the names in the second part. ये समझ में आया बच्चों? Is this clear? Cords are placed according to the names in the second part. ये याद रख सकते हो. You can remember this. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? The medial cord is medially placed, lateral cord is laterally placed, posterior cord is behind. इसका मतलब है the cords are placed according to the names in the second part. अब first part में क्या हुआ? First part में rotate हो गया. दया कुछ तो गड़बड़ है. Rotate हो गया.
So medial cord has come posterior, posterior cord has gone lateral. ऐसे rotate हो गया. So in the first part, पीछे कौन है? Medial cord. Laterally कौन है? Lateral cord and posterior cord. समझ में आ रहा है? Okay. Now come to the third part. अब third part में क्या होता है? Nerves, the branches of the cords. So first part में, in relation to the axillary artery, what do we get? Cords. In first part, we get the cords of the brachial plexus. In the second part of axillary artery, we get the cords of the brachial plexus. And in the third part, what do we get? We get the nerves or branches. मतलब lateral cord के जितने भी branches हैं, वो lateral side पे हो गए. This is the musculocutaneous nerve. Posterior cord के branches इधर होंगे, axillary nerve, radial nerve, and यहाँ पे होता है ulnar nerve, and this is the medial cutaneous nerve of forearm, and this is the medial cutaneous nerve of arm. These are the branches of the cords. These are the branches of the cords. I'm not going to details of the brachial plexus, but बस ये याद आपको पता ही है ना, brachial plexus के cords होते हैं, nerves होते हैं. So आप अगर brachial plexus surgeon बनते हो, in future you become a brachial plexus surgeon. MBBS, MS General Surgery, MCH brachial plexus. You are a brachial plexus surgeon focusing only on brachial plexus. मतलब through and through दिखता है brachial plexus. हाँ. Okay, and you are operating on the lateral cord. Lateral cord पे operate करना है आपको. So how do you know where is the lateral cord? You are very brilliant. Your anatomy is perfect. आपने skin superficial fascia निकाल दिया, pectoralis major को निकाल दिया. What are you seeing now? Pectoralis minor. Pectoralis minor को निकाल दिया, which is that part of the axillary artery. Second part, and the cord which is lateral in the second part has to be the lateral cord. The cord on the lateral side is lateral cord. अब third part में क्या मिलेगा? The nerves. जितने भी branches हैं lateral cord के, that you'll be getting in the third part. जितने भी branches है posterior cord के, that will be getting in the third part on the posterior aspect. That's a simple way to remember the axillary artery. बच्चों, I hope I'm clear to all of you. Understanding or no? Yes, all of you. So ये सब मैंने लिख के दिया है. This you can go through it later. So same what I've told you. I put it on the paper. ये same है. Same slides which I've drawn. बच्चों कुछ doubts है तो बोलो. Relations. Now we come to the branches of axillary artery. चलो बोलो, यहाँ तक कुछ doubts हैं? Relations are clear? मतलब relations कैसे याद रखोगे? एक मिनट. I'll just put this down for you once again. हाँ. So first part of axillary artery का anterior relation कौन है? Pectoralis major. Posterior relation is the medial cord and the serratus anterior. Lateral relation is lateral cord and posterior cord. Second part of axillary artery, anterior relation, pectoralis major, pectoralis minor. Posterior relation is posterior cord and subscapularis. Medially is medial cord, laterally is lateral cord. And वैसे ही third part में. Fine है बच्चों? हाँ, Jessica, fine. Very good. Okay, now coming to the branches of axillary artery. बस branches आपको याद रखना है. Branches you just need to know the branches of the lateral cord. You just need to know the branches of axillary artery. I'll just make it simple for you. Have a look. This is the axillary artery. तो कितने parts होंगे? First part, second part, and third part. Simple, simple, simple. First part gives one branch, second part gives two branches, and third part gives three branches. So which is the branches from the first part? That's the superior thoracic artery. Superior thoracic artery. Second part, that's the lateral thoracic artery, and two branches, thoracoacromial artery. So first part का branch is superior thoracic, second part के दो branches है lateral thoracic and thoracoacromial, third part के तीन branches है anterior circumflex humeral, second posterior circumflex humeral, and third is subscapular.
These are the branches. बस बच्चों branches याद रखना है. This is asked in the vivas. This is asked in the MCQs. Simple है. First part 1 branch. Second part 2 branches. Third part is 3 branches. First part की एक branch है superior thoracic artery. Second part के 2 branches है lateral thoracic and thoracoacromial. Third part के 3 branches है anterior circumflex humeral and the posterior circumflex humeral and subscapular. Have a look at this. So this is the pectoralis minor. This artery is the superior thoracic artery. Superior thoracic artery is given on the upper border of pectoralis minor. This is the thoracoacromial, a branch from the second part, thoracoacromial artery. This is the lateral thoracic artery, a branch from the second part given on the lower border of pectoralis minor. This lateral thoracic artery is the main artery supplying the breast. ये main artery है जो breast को supply करती है, lateral thoracic. Fine. This lateral thoracic artery accompanies the anterior axillary lymph nodes. Anterior axillary lymph nodes. Third part के branches. Number 1, this is anterior circumflex humeral, posterior circumflex humeral, and subscapular. These are the branches from the third part. This are given at the lower border of subscapularis muscle. Subscapularis के lower border पे होता है. ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतना है axillary artery के बारे में याद रखना है. First part superior thoracic, second part lateral thoracic, thoracoacromial, third part is anterior circumflex humeral, posterior circumflex humeral, and the subscapular. Fine. This you have to know. उसमें से lateral thoracic artery accompanies the anterior axillary group of lymph nodes. The subscapular artery accompanies the posterior axillary lymph nodes. ये याद रखना. So that's about the axillary artery. I hope this is clear to all of you बच्चों. मैंने ना normal तरीके से explain नहीं किया है ये. I've told you in a totally different way. I hope this is clear to all of you. Yes students, is this clear? Answer. कुछ doubts है तो बोलो. If there's anything not clear, you let me know. The session is open for question and answers. चलो बोलो. The session is open for question and answers. एक मिनट. If there's anything not clear, let me know. हाँ बोलो बच्चे. जतिन, any doubt? क्या doubt है जतिन? Answer that. Ask that. Sorry. Yes, Jatin. Thank you to all of you. I'm just typing. Thank you to all of. Doubt है तो पूछो Jatin fast. If you have any doubts, ask me. Thank you so much for your patient listening. I hope this one-shot series is beneficial for you. एक बार revise कर लो वापस and you are perfect with your Viva and your MCQ series. Thank you so much. Thank you. जतिन कुछ डाउट है तो बोलो. Thank you ऋतिक. क्या लिख रहे हो? Complete upper and lower. अरे बच्चे इजी है ऐसे ना. सी कंसेप्ट क्लियर करो. डू नॉट जस्ट मग अप. नाउ दिस एक्सिलरी आर्टरी आई हैव टोल्ड इन अ टोटल डिफरेंट वे. पहले एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला याद करो, फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला याद करो. एंड कैसे सी यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड. लाइक सपोज आप एक्सिलरी आर्टरी हो, यू आर द एक्सिलरी आर्टरी, यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड. हाँ बोलता हूँ अब्दुल्ला, यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड. तो बेड कौन है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. आपने चद्दर लिया, ऊपर चद्दर लिया, चद्दर इज द एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. एंड हु आर यू? यू आर द एक्सिलरी आर्टरी. ऐसे सोचो तो बहुत इजी होता है. समझ में आया? सो चद्दर इज द एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. द बेड शीट दैट यू टेकन इज द एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. You are the axillary artery and the bed is the posterior wall of axilla. So that becomes very easy to understand. And along with you, who's in the axilla? The brachial plexus, the cords and the nerves. Complete an upper and lower limb फरे सीरीज है ऑन यूट्यूब. PW MedEd की फरे सीरीज है, वो आप देख लो. सो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा. स्मॉल वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट किया है आपके लिए एंड आई होप दिस इज बेनिफिटिंग यू. सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अगेन अ स्मॉल टॉपिक. थैंक यू.
I have done MBBS and MS in anatomy. ठीक है, you can message me later, जतिन, you can message me later. हाँ, FMG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. यस, बहुत इंपॉर्टेंट. एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रांचेस पे भी सवाल आते हैं. हाँ, ब्रांचेस पे एमसीक्यूज आते हैं. हाँ ऋतिक, एफएमजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ ना, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. 12th नीट का बैच शुरू हुआ होगा जतिन, एक बार इंक्वायरी कर लो 12th नीट का. दिस इज फॉर द एमबीबीएस एंड द पीजी स्टूडेंट्स, है ना. ओके, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, हैव अ प्लेजेंट नाइट, थैंक यू, आई विल स्टॉप हियर.